Good morning, friends. This is Abhishek here. And today's lecture, it's not about the lecture, it's about the guidance, the interview guidance. And first of all, I congratulate all the students who have successfully cleared the mains exam, IBPS so mains exams, and who has not cleared, don't worry. Try hard next time. Definitely you will get cleared. So this is basically for who has already cleared the IBPS so exam for 2025, okay, and they are preparing for the interview, okay. So this particular session is going to happen to help them to crack the IBPS so interview exam, okay. As I have also attended the IBPS so exams last year, I attended the SBIS so last year. I have selected in one of them. I also attended the CDB exam, okay. So this will help you how you can face the interview. I will share you my notes, how I prepare for the IBPS SOIT. Okay, what are the topics I have covered? Okay, where I have seen where I follow the newspapers. What are the content they can ask? Some interview questions which they have asked, and I have noted down from different sources. Actually, last year multiple students around 2000 students who has 2024 I think 2000 plus student for IBPS SOIT. They have given the interview, okay, and around 700 students they have selected, okay. So most of them they share their experience, their questions, label they ask. So based on that, I found 60 to 70% questions was common for all the students, okay. So those questions I have prepared a notes for them. I have noted down those questions, okay. Based on that, I tried to guide you, okay. And if you need any guidance, as I have already selected in this, okay, so if you need any guidance, let me know, guys. I will help you, okay. And then you can directly contact me through the my Gmail, okay. From there I will schedule a one-to-one interview calls, okay. It's a free of course, guys, not related to any money. I'm not taking any money because I don't want to. That's what I suffered, that I will definitely help on those areas, okay. So you can contact me in the banking conquer 45 at that gmail.com, okay. So in this emails, if you drop a emails, I will definitely get it. I will share my contact details. I will contact connect you personally one to one. Then I will guide you how you can be score as much as you can, and how you can be confident if if this is the first time your interview, okay. This is for the fresher job, right? So most of the students they are facing the first time interview, so I will let you know what are the things you need to cover, okay. And definitely, guys, this session and this interview calls, this interview guidance will definitely help you in your upcoming interview session, okay. So let me quickly share my screen for what I have prepared for the interview, okay, questions, okay. So actually this is my notes. I'm sharing my notes. If you're able to see this screen, okay. So here you will see this is this uh, IBPS SO interview preparations. Okay, so before that, you will see there are a lot of other things I have also read: SOIT, SBI SOIT, IBPS SOIT interviews. Okay, and some is CSIT and general knowledge, current affairs. Okay, different areas that can be asked in any of the exams. Like if you have, I have also attended the PU exam, so multiple questions, multiple ask they ask from current affairs. Okay, so I prepared on that. Okay, so this one is basically I have prepared for this SOIT only. Okay, so here if you read this, this is my intro. What I did actually, this is the same thing. Whatever I written here, this is my industry knowledge. Okay, I worked on around 9 years in Tata consultancy service, and later on I then shifted on the banking ITSO. Okay, so here this is actually the my introductions. I can say you can prepare based on your whatever is suitable for you. Okay, you can prepare on that. Then the locations where you wanted to belong. I belong to the Jaunpur, so I written whatever is applicable for me. The Uttar Pradesh, Jaunpur, all the because multiple times sometimes the interviewer kind of ask the questions related to the your city also, right? Which city you belong? Who is your uh, who's the what is the governor of your states, okay, and who is the MP from your particular area,
constituencies. Okay, what are the famous area? Okay, so those things, whatever the Lok Sabha seat, whatever the Rajya Sabha seat, legislative assembly seat, who is the prime minister, who is the I can say the opposition leader. Okay, so all those questions, multiple things they can ask. Okay, so you can also prepare based on that. Okay, because if you prepare all those, prepare definitely. If they are interested, they will ask. Most of the time, they ask basically. Okay, if there is a hobby, please prepare something that is related. My hobby is cooking, so I prepared multiple things. I know a lot of things about the cooking, so I prepared multiple things about the cooking. It's not written here, but I prepare on that. Okay, so if they ask, definitely I would have answered, and definitely they have asked in 2014 for interview. Okay, so now let me just go quickly to the uh next question, whatever they have asked. Okay, so if you score, see, this is my experience. Okay, so here, if you see this TCS, right? So they ask about my TCS because I worked in Tata Consultancy Service earlier. Okay, so what which product I worked, and then whatever that, who is the CEO of that, who is the CEO of the Tata Sons. Actually, the one question they ask, if anybody is working on TCS, they ask what is the difference between Tata Sons and Tata Groups. Okay, so they ask actually these questions. Okay, and then tokenizations sometimes, because I worked this technology in my project, so they ask what is the tokenization, how it's working. Basically, whatever the question they ask you, try to relate with banking system, how you are going to work in how how whatever the technology you are working, how you are going to apply into the banking system. Okay, just like I work in testing technology, so they may ask question related testing technology or terminology, because I work, so I know, so I did not write any questions about the any topic about the testing terminology, because this is for my resume system. Okay, so from my resume, I prepare everything. I written a question from my resume, so I prepared my resume also. No doubt they did not ask the resume, but I prepared everything from the resume. If anybody has asked question, would have answered this. And this year they asked me, I just selected on that. Okay, and then they may ask what topology they use the banking system, how you can secure the banking, and so. Okay, so see what topology they have asked in banking. So this is star topology. Why they are using star topology? You may answer this one. Okay. You should know, right, what is a star topology. So you know the basic things. So why we use, this is the answer on that. Okay. How you can secure the banking network. So these are the options. These are the topics. Like they are written everything in the bullet point. Okay. It's very easy to remember. Once you read it, definitely you will have remember all those questions. Okay. So what is the machine learning? So this question has been asked into the interview. Okay. Last 2024. And what is the how you are useful in the machine learning in the banking system. Okay, so first thing you need to introduce what is the machine learning, then how it is applicable for the machine learning, okay, to the banking system, how recently banking like machine learning is using by the bank people. Okay, and what is the future scope for machine learning. If you are answering this way, this will definitely good for your interview. You will score at least 90%. I'll tell you, I scored 95, I can say 95, 94 percentile I scored on. Okay, in the interview. Just because of this, I prepare all the peoples whoever share this experience. Okay, I just noted down everything. Okay, and then after noted down, I prepare everything. Okay, and some questions from my end also. Whatever I learned from there, I learned from every other people's, and then I prepared. And when I sat in the interview, whatever the question they asked, I was very confident to answer it, each and every questions. Okay, so because of that, might be they have given me the very good marks in interview. So now machine learning, please prepare about the machine learning, how it is useful in the banking, where we are using in the machine learning bank system. Okay, you should know all those questions. Okay, then deep learning, how you are using the deep learning. Okay, deep learning, what is the deep learning, how it is useful for banking. Okay, then artificial intelligence, this question has been asked, I can say, multiple peoples, multiple interviews. I given the interviews in Noida. Okay, but from Mumbai, Hyderabad, okay, Bangalore locations, Jaipur, okay, Lucknow people, multiple locations, they have asked this question, what is machine learning, role of the machine learning in banking system, how AI useful in banking, with example. Guys, this you need to learn each and everything, try to grab it, do it, but remember all those questions. You can even
read this line, and then you can try to relate with your experience, with your knowledge, and then try to answer all those questions. Okay, how you're going to use the banking, chat gpt, gemini, and deepseek in bankings, how you like chat gpt, deepseek creating the jobs. Okay, so you should know all those things. Then only sectors like AI expert, education sector where we are using, medical, IT sector, banking sector. Okay, so this question there. Then data warehouse. What is the importance of data warehousing? Okay, you should know the what is data warehousing or how you are extracting the data from the data warehouse. Okay, and what is the useful for storing the data. You should know all those. See, I written everything. Okay, how IoT is useful for banking systems. Okay, so this question has been asked, guys. That's what I written. Okay, disaster recovery, how to handle it. Suppose some banking system, some banking location, there is a fire or some disaster happened, flood happened. Okay, earthquake happened, and then banking system broke out. So how you are try to recover the banking system so that normal banking facility is not hampered. Okay, so what are the options you are, how you can defend it. Okay, so you should know all those things, and then you have written multiple things. Use the rate to normalization the data so that we can data backup accurately without any duplication of data. Okay, how you can defend the system from the malware. Okay, CPS system से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे. ओके, व्हाट इज CPS सिस्टम. ओके, और ये क्या होता है, चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम क्या होता है, OSI मॉडल क्या है. ठीक है, OSI मॉडल्स क्या है, वो कैसे काम करते हैं, हर एक मॉडल का, हर एक लेयर्स का एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ेगा, क्या है, कैसे काम करती है. ठीक है, ये सारा है. उसके बाद देखोगे तो अब मैंने कुछ टॉपिक्स ये यूज कर रहे हैं. TCP IP मॉडल्स क्या हैं. ठीक है, DNS स्पूफिंग, स्पूफिंग क्या होती है. RD, देखो DBMS और RDBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डिफरेंसेस क्या होती हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था. HTTP और HTTPS में डिफरेंसेस पूछा गया था. ओके, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे. SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर, एंड ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बैंकिंग सिस्टम में हमेशा यूज होता है. ये चीजें रट के लाना कि क्यों यूज होता है, क्या है मतलब. दोनों का मतलब एक ही है. एक एडवांस वर्जन है TCP का, TLS का, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी का. ओके, देन कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर जनरेशन जो है 5 जनरेशन तक है, तो क्या क्या है, कौन कौन से जनरेशन में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ था, वो रीड कर लेना. क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्वांटम कंप्यूटिंग होती क्या है, एंड हाउ इट इज वर्किंग. नॉट इट्स वर्किंग, बट जस्ट होती क्या है, एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए आपको. देन फायरवॉल के बारे में बहुत डिटेल से आप लोग को पढ़ना है, बिकॉज every time you have to protect your system from the ha- from the threats, from the malware. Okay, from the third party peoples. Okay, who are trying to enter into your network. The firewall is only who can protect from the outside the world. Okay, so आपको VPN यूज करो, फायरवॉल में लेयर्स यूज करो, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल यूज करो. ओके, सारी चीजें फायरवॉल ही प्रोटेक्ट करती है. आपको बहुत डिटेल्स में इसको पढ़ना है, एक एक पॉइंट्स आपको समझना है इसके बारे में. मैंने बहुत कुछ लिखा है फायरवॉल के बारे में. ट्रैफिक फिल्टरिंग क्या है, कैसे प्रिवेंट करता है. ठीक है, उप्स के रियल टाइम एग्जांपल्स आपको याद कर लेने हैं. डार्क वेब क्या होती है. ठीक है, डार्क वेब से क्या जनरेशन है. ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चन थे इससे कि कॉग्निटिव नेटवर्क क्या होती है. ठीक है, ये पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट तो इतना नहीं है. कभी कभी एग्जामिनर का मूड खराब हो गया तो कुछ भी पूछ दे. API गटवे क्या होती है. ठीक है, ये चीज पढ़ लेना आप लोग को. पुश एंड पुल बैंकिंग ट्रांजेक्शन क्या होती है, एज कंप्यूटिंग क्या होती है, लोड बैलेंसिंग क्या होती है. देखो ये चीजें पढ़ना. ये हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल होता है ना, इंटरप्शन डिटेक्शन सिस्टम, IDS सिस्टम लगता है उसमें. तो ये कैसे काम करता है इंटरप्शन डिटेक्शन सिस्टम, ये पूरा उसका डायग्राम है, और ये चीजें जो है लिखी हुई है उसके बारे में. तो ये आप चीजें पढ़ लेना. मैं क्या करूंगा कि इसको एक PDF में कन्वर्ट करके अपने चैनल पे डाल दूंगा. ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पे, मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है. ठीक है, तो मैं उस चैनल पे डाल दूंगा. आप लोग उस चैनल को जा करके, मैं जब भी वीडियो डालूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक डाल दूंगा. आप उस चैनल को सर्च कर लेना, एंड वहां से जाकर के इस वीडियो को डाउनलोड करना. ये डेफिनेटली हेल्प करने वाला है. अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स है, कोई मेरा एक्सपीरियंस जानना है, या आपको चाहिए कि ठीक है मैं एक मॉक इंटरव्यू दे दूं. ओके, सो डेफिनेटली यू कैन जस्ट ड्रॉप अ ईमेल, यार मेरे चैनल पे आके कमेंट कर सकते हो कि मुझे 1-to-1 टेक चाहिए. ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लगेंगे गाइस. ओके, इंटरव्यू से पहले किसी भी दिन आप चाह के, अभी मेरी
लीव चल रही है, तो आप किसी भी दिन जो है जा करके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूंगा। ठीक है। क्योंकि मैंने इतने सारे इंटरव्यू दिए हैं, मेरे 9-8 ईयर का एक्सपीरियंस भी है आईटी में, तो मुझे बहुत सी चीज़ें, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू भी लिए हैं अपनी कंपनी के लिए। ठीक है। तो मुझे बहुत सी नॉलेज है चीज़ों के बारे में कि क्या कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे आपको आंसर करना है। सो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। बस जस्ट यू नीड टू जस्ट कनेक्ट मी, ओके। तो कुछ बैंकिंग के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप रट लेना, क्योंकि आप एक बैंक में एग्जाम, बैंक का इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो डेफिनेटली इंटरव्यूअर शुड नो कि आपको क्या आता है बैंक के बारे में, आपको नॉलेज क्या है, आप बैंक में काम करने जा रहे हो, आपको बैंक के बारे में क्या पता है। एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि अपार्ट फ्रॉम दी लेंडिंग एंड बोरोइंग, ओके, व्हाट आर द अदर वर्क्स ऑफ बैंक। तो ये चीज़ें पढ़ लेना। मैं थोड़ा सा समझ नहीं पाया, क्योंकि हम मोस्टली चीज़ें लेंडिंग बोरिंग पे होती हैं, बट हमें नहीं पता उससे भी पचासों चीज़ें होती हैं, जो फिनटेक बैंकिंग क्या होती है, ये चीज़ पढ़ लेना। जो टर्म बैंक से टर्मोलॉजी जो नहीं होती है, वो चीज़ पढ़ लेना। ये बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखी, फिजिकल ऑनलाइन बैंकिंग का स्विफ्ट की क्या होती है, इसकी क्या आईएफसी कोड और स्विफ्ट कोड के क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है। ये चीज़ें आरबीआई की कुछ डेटा, जीडीपी वगैरह क्या चल रहा है करंट में, देखो ये तो ओल्ड डेट जीडीपी के डेटा हैं। ठीक है। आप लोग इस चीज़ को पढ़ लेना कि क्या है रेपो रेट्स वगैरह, मॉनेटरी पॉलिसी में जो भी मॉनेटरी पॉलिसी की जो रिसेंट अपडेट्स आई होंगी उसको पढ़ लेना, ओके। एंड मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ लेना पूरा, एक एक चीज़ के आरआर क्या होती है, रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, एनएस मार्जिनल फैसिलिटी रेशियो क्या होती है। ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ लेना, नहीं तो आपको कभी कभी होता है कि वो एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि मेरे साथ यही हुआ था। मैं बहुत चीज़ें पढ़ के गया था आईटी का, जो मैं फर्स्ट इंटरव्यू दिया था आईबीपीएस आईटी का। उसमें हुआ क्या कि मैं तो सब कुछ आईटी का पढ़ के गया था, बहुत रियल नॉर्मल चीज़ें बैंकिंग का पढ़ा था। उन्होंने आईटी को कुछ मुझसे पूछा ही नहीं, लिटरली बताऊं तो बस एक दो क्वेश्चन पूछे थे मेरे प्रोजेक्ट के बारे में, दैट्स ऑल। उसके बाद उन्होंने बैंकिंग के सिस्टम पे पूछने लगे, तो मुझे समझ में आया कि ये कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आप लोग भी पढ़ लो जो भी है क्वेश्चंस। यहाँ से आप देखोगे कि आधार इनेबल्ड विच कंट्री में कौन कौन सी यूपीआई है, यूपीआई के करंट ट्रांजेक्शन्स आप लोग देख लेना। ठीक है। बिल पे का, उसके सीओज वगैरह के, भीम की सर्विसेज क्या है, यूपीआई यूनिफाइड पेंशन स्कीम्स क्या है, जो जो करंट अपडेट्स में है ना, अपने करंट अफेयर्स भी ढंग से पढ़ लेना। ठीक है। जनधन के अकाउंट्स क्या हैं, ठीक है। वेन द बैंकिंग नेशनलाइजेशन क्या है, ये पूरा मैंने बहुत अच्छे से लिखा है, एक एक पॉइंट्स लिखा है, आप लोग जाकर इसको पढ़ लेना। ठीक है। आरटीजीएस और नेफ्ट में डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक है। आईएमपीएस क्या होती है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या है, लोन टाइप्स ऑफ लोन्स क्या हैं, ठीक है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में क्या क्या परसेंटाइल है, ये हो सकता है डेटा अपडेट हो, मुझे नहीं पता है। तो एक बार अपनी तरफ से वेरीफाई कर लेना कहाँ कहाँ पे डेटा जो है, कहाँ कहाँ पे चीज़ें प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में हैं। इनके कुछ ये परसेंटेज चेंज होते रहते हैं, तो ये परसेंटेज का आप जाके देख लेना एक बार। ठीक है। एमआईसीआर क्या होती है, ठीक है। अब चेक ट्रांकेशन सिस्टम्स क्या हैं बैंकिंग में, तो मैंने बहुत सारा चीज़ लिख रखा है। अब देखोगे कि आप नॉन परफॉर्मिंग एसिड क्या होती है, कैसे होती है, डाउटफुल एसिड क्या होता है, सब स्टैंडर्ड एसिड क्या होते हैं, एनपीए की रिकवरी क्या होती है, ये ठीक है। व्हाट इज ट्रांजेक्शन कंकरेंसी क्या होती है बैंक्स में, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हु इज सीजीआई, हु इज वास। देखो ये पुराना डेटा है, ये सब चीज़ें पढ़ लेना प्लीज़। ज्ञानेश कुमार, ठीक है, ओम बिरला, ये सारा चीज पढ़ लेना आप लोग, क्योंकि ये सब ठीक है। रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर आप लोग एक्सपीरियंस हो तो आपके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है प्रोजेक्ट में, ठीक है। ये चीजें बहुत अच्छे से पढ़ लेना कि आईटी का वर्क क्या है, क्या करने वाले हो, ये सब चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, क्रिप्टो करेंसी एक एक टर्म्स मैं बता रहा हूँ, साइबर फॉरेंसिक, ठीक है। साइबर फॉरेंसिक का एक टर्म है, ये टर्म है, इसके बारे में पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। सीबीआई वगैरह में इसकी जॉब भी निकलती है साइबर फोरेंसिक की, ओके। हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें, मैंने कभी किया नहीं है, क्योंकि मुझे पता भी नहीं चलता कब निकलता है जॉब एक्चुअली सही बताऊं तो। सो आप लोग ट्राई करना कि इसको इस टर्म को याद कर लेना, और इस टर्म के बारे में कि होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और याद कर लेना कि जैसे कि हमारे पास ना बैंकिंग सिस्टम में कौन से सॉफ्टवेयर, जैसे कि टीसीएस का बैंसेक है, ठीक है, और इन्फोसिस का फिनाइकल है। तो कौन कौन सी बैंक्स फिनेकल सॉफ्टवेयर यूज करती हैं, कौन कौन सी बैंक वैनसेक यूज करती हैं, ठीक है। जैसे कि एसबीआई या सीबीआई देखो वैनसेक करती है, बाकी सारी जो आईडीबीआई भी यही यूज करती है, ठीक है। ठीक है, बट फिनेकल अदर बैंक्स यूज करती हैं। तो ये चीज रट लेना कि कौन कौन सी बैंक कौन कौन सी है, ठीक है। वाई डू यू वांट टू ज्वाइन द बैंकिंग एज यू आर ऑलरेडी रेपुटेड कंपनी। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो ये मैंने अपने लिए लिखा था, बहुत कुछ लिखा था, ठीक है।
सो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें कि मेरे कॉलेज के बारे में कुछ एक्सपीरियंस था, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स के बारे में, ठीक है। और ये सब है, मतलब कि ये मेरे एक्सपीरियंस के बारे में, क्योंकि मैंने इस पे काम किया है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, ऑटोमेशन में काम किया था, तो ये सब मैंने लिखा था। अगर एप्लीकेबल हो तो आप पढ़ना, नहीं एप्लीकेबल है तो मत पढ़ना इसको, क्योंकि ये कोई ज़रूरत नहीं है, ये से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपको। अगर एक्सपीरियंस हो तो, अगर फ्रेशर हो तो कोई इशू ही नहीं है फिर तो। ओके। सो अगर आपको कोई भी इससे डाउट है, कोई भी चीज, क्वेश्चन है, कुछ भी इस ईमेल पे कर सकते हो। और ओके गाइस, तब तक के लिए थैंक यू, and best of luck for your interview. Okay, let me know if you still facing any issue in your interview.